अस्सलाम व्यूवर्स एंड लिसनर्स एआरडी के स्पेशल और इम्प्रॉम्प्टू शो में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा ट्विन भाई अली मेरे साथ है और हमने एक स्पेशल शो करने का प्लान किया। दैट इज़ के पहला एशेज टेस्ट हुआ बेसबॉल वर्सेस कम बॉल, मतलब पैट कमिंस ने जाके बेसबॉल को इंग्लैंड में जाके हरा दिया। ऑन टॉप ऑफ दैट के उन्होंने WTC फाइनल पे जीता हुआ था। सो ऑल सॉर्ट ऑफ डिबेट्स, ऑल सॉर्ट ऑफ आर्टिकल्स, ऑल सॉर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा हो चुका है। हम ARD पे क्या करने लगे, वी विल डू 5 थिंग्स जो हमने लर्न की या प्रिडिक्ट कर सकते हैं Cummins ball versus baseball. So Ali will be doing the majority of things. So Ali, क्या हाल है, कैसे हो? One liner about first Ashes Test. हाँ मैं बिल्कुल ठीक ठाक और वन लाइनर ब्लॉकबस्टर। Yeah, I think perfect word to choose. Perfect word to choose from the vocabulary. So just we will start करते हैं। आप अपनी थॉट्स बताते रहेंगे जब हम वन बाय वन टॉकिंग पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। सो अली, पूरा मैच देखने के बाद या इवन प्री मैच हाइप बनी हुई थी 2005 के साथ एनालिसिस एंड व्हाट नॉट, पहला टॉकिंग पॉइंट जो हम लर्न कर सकते हैं या इवन फोर्सी ट्रेंड कर सकते हैं, वो आपके जहन में क्या बना? ओवर टू यू। हाँ जब से ये बेसबॉल आई है और इट हैज कम फॉर बोथ साइड्स, लेकिन अगेन एक इंग्लिश मीडिया एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा मीडिया है और इट रियली डोमिनेट्स इवन द साइकी ऑफ होल ग्लोबल वर्ल्ड। सो जब से बेसबॉल आई है तो इट हैज बीन अ नैरेटिव दैट अब क्रिकेट एक री इन्वेंट हो गई है। अब बाकी जो ट्रेडिशनल साइड्स हैं उनको भी हमारी तरह क्रिकेट खेलनी चाहिए, अब यही क्रिकेट है, इसके अलावा कोई भी क्रिकेट नहीं, स्पेशली टेस्ट क्रिकेट में। सो that this match really showed that there is more than one ways to win the test match, especially the test match। और आई थिंक यही मेरे लिए सबसे बड़ा पॉइंट था कि आई वॉज ड्रेडिंग फॉर इट कि ये हो, एट सम पॉइंट इट हैज टू हैपन। और शुक्र है ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, बिकॉज आई थिंक ऑस्ट्रेलिया रियली प्लेड अ गुड गेम एंड गुड रिजिलियंट गेम। इसके बारे में मजीद टच भी करेंगे नेक्स्ट सेगमेंट्स में। सो आई थिंक मेरे लिए पहला सबसे बड़ा टचिंग पॉइंट यही था कि यार जो इंग्लिश मीडिया ने एक बड़ी बस बना रखी है कि सिर्फ अब यही क्रिकेट है, इसी को फॉलो करना है, इसके अलावा कोई क्रिकेट नहीं है, उसको एक बहुत बड़ा टेंट पहुंचा है आई थिंक। जब आई थिंक और अली फुटबॉल में लेके चले थोड़ा सा ट्विस्ट डाल देते। इवन आई डू फील जोसे मरीनो के जो लास्ट 5 to 6 years गुजरे हैं, इंक्लूडिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड, समवेयर हिज ऑन डाउनफॉल पार्ट, क्योंकि उस टाइम क्लब बॉल बहुत मशहूर हो चुके थे कि बस अब ये भी है, क्लब की बॉल ही आगे चलने, यही तरीका है जीतने का। सो अगेन, you have to win match, you have to win tournaments, and maximizing your own resources, what you have got, your own skill set. So ये पहला टॉकिंग पॉइंट था जो हमने लर्न किया, जो हम आगे का ट्रेंड देख सकते हैं बेसबॉल वर्सेस कमिंस बॉल। सॉरी, टॉकिंग पॉइंट नंबर 2। हाँ अगेन ये पॉइंट एक आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग, आई थिंक ये क्रिकेट पे एक डिफरेंट सॉर्ट ऑफ लेवल पे रह जाएगा। वो ये है कि जो बेसबॉल की अप्रोच है पिछले आई थिंक अब साल से ज्यादा हो गया है इन्हें, तो आई थिंक ये दो इनकी प्रोबेबिलिटीज को बढ़ाता है। एक तो ये कि फ्रॉम नथिंग पोजीशन जहां मैच किसी भी तरफ ना जा रहा हो, वहां से ये इनके विनिंग के चांसेस बढ़ाता है बिकॉज ऑफ देयर हाई रिस्क। सो आई थिंक द सेकंड टेस्ट दे प्लेड अगेंस्ट पाकिस्तान इन पाकिस्तान रिसेंटली, मैच वाज गोइंग नथिंग। पाकिस्तान टिपिकल जो हम लास्ट 2 सालों से कह रहे हैं, रोड बना के उसके ऊपर बड़े बड़े आंकड़े बनाओ फॉर नथिंग, और आराम से ड्रा करके तो आराम से पीछे पेशक पे पा के तो ये मैच खत्म हो गया जी। लेकिन द वे स्टोक्स एंड ब्रेंटन मैकलम मैनेज दैट गेम एंड देयर ब्रेव डिक्लेरेशन, उन्होंने पाकिस्तान को एक ऐसी सिचुएशन में लिया है कि यार ये मैं तो कहीं भी नहीं जा रहा था, नाउ वी कैन स्निफ इट। सो पाकिस्तान को एक अनसर्टेन पोजीशन पे लेके आ गए वो लोग साइकोलॉजिकली। सो आई थिंक
इस तरह से उनके विनिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट ऑन द फ्लिप साइड इसको मैं रिलेट करूंगा स्टोक्स की डिक्लेरेशन से पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एशेज टेस्ट में। दैट वाज अगेन अ वेरी बोल्ड कॉल। स्टोक्स के ध्यान में ये भी था कि चौथे और पांचवें दिन रेन की फोरकास्ट है और पांचवें दिन हुई भी है। तो अगेन इंग्लैंड वर इन कमांडिंग पोजीशन। फर्स्ट डे आराम से मजीद 100 स्कोर लगा के फेंटा लगा के तो ऑस्ट्रेलिया को आउटस्कोर भी कर सकते थे, लेकिन अगेन इट इज देयर अप्रोच। और ये इनके उस सिचुएशन जहां वो कंफर्टेबल हो वहां से उनके हारने के चांसेस भी बढ़ा देते हैं। तो ये दो प्रोबेबिलिटीज के चांसेस 10 फोल्ड इंक्रीज करके हैं बेसबॉल अप्रोच से। या आई टू echo those thoughts. ऑफ कोर्स फिर यही होता है कि हर टाइम हर ओवर ना आप टैक्टिकली फुटबॉल में मरना होता है कि हर 5 मिनट्स बिल्कुल। बाद टैक्टिक्स चेंज हो रही है। नाउ क्रिकेट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट वाचिंग एक्सपीरियंस। Ali, time watch आता है talking point number 3, what we learned from first ashes or what we can foresee. Over to you. हाँ अहमद, ये बिल्कुल आई थिंक बेसबॉल इज doing maximization of their resources to their best because of England वो क्रिकेटर्स टेक्निकल क्रिकेटर्स नहीं प्रोड्यूस कर रहा लाइक दिस एलेस्टर कुक्स, स्ट्रॉस हो गया, ये मार्कस ट्रेस्कॉथ बैक इन द डेज। वो वाले क्रिकेटर्स नहीं है कि आराम से मतलब कि इनिशियल प्रेशर सस्टेन करके वो बड़े 200 बना सकें। ये उतने टेक्निकली इक्विप प्लेयर्स नहीं है कि पहले आराम से ठक्का लगा के तो बाद में सेंचुरीज बना लेंगे। दे आर नॉट दोस प्लेयर, दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग दोस काइंड ऑफ प्लेयर्स इनफ। जो रूट है वो भी ट्रेडिशनल ओल्ड स्कूल देयर प्रोडक्शन है। और जो नई प्रोडक्शन लॉट इनमें है जैकराली हो गया, ओली पॉप हो गया, ये टेक्निकली करेक्ट प्लेयर्स नहीं है। सो दे हैव वेंट विद लाइक ओके वी आर प्लेइंग विद एग्रेसिव 4 to 5 runs per over अप्रोच। इट इज बेटर कि आप 20 बालें खेलें उसमें 25 स्कोर बना के आउट हो जाएं। इट इज बेटर देन आप 20 बालों पे ठक्का लगाएं और 2 स्कोर बना के आउट हो जाएं। और आई थिंक जिस तरह ये इनके प्लेयर्स हैं मोस्टली टी ट्वेंटी माइंडेड प्लेयर्स हैं, हैरी ब्रुक हो गया। सो आई थिंक दिस अप्रोच रादर फिट्स टू देयर करंट क्रॉप एंड आई थिंक दे आर डूइंग गुड इन दैट परस्पेक्टिव। थोड़ा मेरा डिसएग्रीमेंट था ओली पॉप। आई डू कंसिडर कि उसकी टेक्निकल एबिलिटीज बहुत अच्छी हैं। हर बंदे का कोई ना कोई वीक स्पॉट होता है, वो एक्सपोर्ट बंदा। इवन विराट कोहली भी एक्सपोर्ट हुआ इतनी बुरी तरह, बट एनीवे वी कीप इट मूविंग, वी कीप इट मूविंग। अली, आई थिंक वी आर टर्निंग टुवर्ड्स द क्लाइमेक्स साइड ऑफ थिंग्स। टॉकिंग टर्निंग टुवर्ड्स द क्लाइमेक्स, ऑफ कोर्स क्रिकेट का सबसे बड़ा क्लाइमेक्स लाते हैं फैंस, इवन whether they are watching on TV or whether they are in the ground. So Ali, आपका टॉकिंग पॉइंट नंबर 4 इसी के अराउंड है, सो ओवर टू यू। हाँ बिल्कुल है, मुझे आई थिंक ये इवन रिजल्ट से भी ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट है बेसबॉल का क्रिकेट के। जो न्यू फैंस है, हम तो खैर पुरानी जनरेशन के हैं, हम मतलब 5 ओवरों में कोई सिंगल स्कोर भी ना बने तो हम उसमें भी कोई फैसिनेशन ढूंढ रहे होते हैं कि यार वाह कितना अच्छा डिफेंस हो रहा है, आराम से टक्कर लगा हुआ है। लेकिन इस प्रेशर को सस्टेन करने के बाद हमारा यूनुस खान पूरा नर्वस हो गया, विल बी गोइंग ऑल ओवर द प्लेस। लेकिन few days later he will be celebrating his 200 or hundreds for over the just for an example. लेकिन जो न्यूबी फैंस हैं they are मोस्टली इंट्रीग्ड इनटू द टी20 क्रिकेट जहाँ पे मतलब ओवर में एक दो चौके ना लगे तो उन्हें लगता है ये क्रिकेट नहीं है। सो उनके लिए एक परफेक्ट परफेक्ट एक एंट्री पॉइंट है। इवन फॉर द फैंस हु आर स्टिल नॉट इनटू द क्रिकेट, they are still hearing that baseball wise over the globe, and I think that is good for the cricket. वो I think इससे क्रिकेट में आ जाएं और even more so के टेस्ट क्रिकेट में आ जाएं, they will obviously like the baseball, but then they will also say कि सिर्फ यही बेसबॉल ही क्रिकेट नहीं है, बेसबॉल को कमिंस बॉल भी हरा सकती है। सो आई थिंक दे विल सी बोथ साइड्स ऑफ इट एंड आई थिंक दैट इज अ ह्यूज ह्यूज इन्फ्लुएंस ऑफ बेसबॉल एंड क्रिकेट। और आई थिंक बेन स्टोक्स इवन अगर इसका विन लॉस रेशियो नेगेटिव में भी चला जाता है इन द 2 years,
this impact will surely be such a monumental figure if someone writes history on the cricket or on a modern cricket. So I really appreciate it. जापानी और आई थिंक इंग्लैंड पे टू हार्श क्रिटिसिज्म भी देखा है मैंने इंग्लैंड पे भी टू हार्श क्रिटिसिज्म है गेम ऑफ फाइन फाइन बेयर मार्जिन से one call either way would have gone like decided the match other way so Yeah, that I is the think beauty of yeah those such tight games and bold calls, of course. And yes of hindsight course is always perfect. Hindsight is always perfect. yeah of course वो फॉर्चून्स रिवर्स पे भी 2019 हेडिंगले में लियोन एक तरह से कैजुअलिटी था इस दफा बैन स्टोक्स वो रोज पे रिवर्स होते हुए नजर आए तो again it was beauty of the game. Ali, it is about the time that last and the penalty made point which we learned from BAZBALL versus Cummins ball. So point number 5, Ali. Point number five purely Aussie way के ऊपर है. I think Aussie that is in their genes to never ever give up. Mm, Shane won Adelaide to 2006. England were all over Australia for 4 days. Come at the last session, Shane won, brings his magic on 4 for 39 in his 25 over spell, completely changes the game around, and Australia go on to win the game. So I think Australia in cricket are one of those sides. They say never, और आई थिंक इनकी resilience जो इस कमिंस बॉल में और ज़्यादा improve हो चुकी है because looking back in their teams in the past, they had much more superior talents and much more flair. जहाँ वो एडवेंचरस क्रिकेट भी खेलते थे, मतलब गिलक्रिस्ट आके 60 बॉलों पे 100 बना देता था उस बैक इन 2004 2005. तब उनके पास बहुत ज्यादा एडवेंचरस प्लेयर्स थे, लेकिन रेजिलियंस तब भी उनमें थी और रेजिलियंस इस टीम में भी उनसे भी ज्यादा है बिकॉज अगेन इंग्लैंड वर प्रॉपरली गोइंग फॉर इट और तमाम 5 दिन में यही प्रोपेगेंडा चलता रहा कि इंग्लैंड ऊपर है. हालांकि मेरे लिहाज से जब ऑस्ट्रेलिया ने उनका पहले इनिंग्स का टोटल मैच कर दिया था, फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स आई थॉट ऑस्ट्रेलिया वर फेवरेट्स टू विन द गेम. सो आई थिंक देयर रेजिलियंस एंड कमिंस बॉल और आई थिंक ये प्रॉपर ऑजी वे में जा रहे हैं. Although just as I mentioned इनके पास वो फ्लेयर वाले प्लेयर्स नहीं है कि वो एडवेंचरस जाके खेलें, लेकिन they still show that resilience and never say die approach. Or and Ole Robinson, you better not sledge Aussies. Yup, Matthew Adden or Ricky Ponting ने full time game on करके and I don't get of course हम close out करने लगे I don't get why in between ashes वो विजडन के लिए आर्टिकल लिखना शुरू हो गया I don't get it how even ECB allowed it but anyway 3D like 5D chess is ongoing proper 2005 or 6 vibes. So just viewers we are pretty much done. We are hopeful that you liked it. और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आए ये फॉर्मेट पसंद आए कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. हमने 5 पॉइंट्स मेंशन किए आपने 3 काम करने लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. सो दैट इज़ ऑल अली थैंक यू फॉर योर इनपुट्स और जहां हम आप सबसे इजाज़त चाहते हैं जित रहें सलामत रहें अल्लाह हाफिज़.